This is the first budget in post-COVID scenario. दर्शक बंधु शुणी नियंतु मुख्यमंत्री बजेट प्रतिक्रिया। पोस्ट कोविड्र यह हेउछि प्रथम बजेट। And there are a lot of new challenges which this budget is expected to address. Some of the positive points are focus on capital investment to push growth, reintroduction of developmental financial institutions, allocation for COVID vaccination, industry and sector-specific interventions offers hope if matched with allocation, bold decision to expand fiscal deficit to provide growth impetus, a medium and long-term vision for self-reliant India. अनेक नूतन चैलेंज अछि जहा ए बजेट समाधान करिवो बोली आशा करा जाउथला। केतक सकारात्मक बिंदु हेउछि अभिवृद्धि को आगे नबा पई पुंजी विनियोग उपरे ध्यान देबा, विकासमूलक आर्थिक प्रतिष्ठानर पुनः उत्पादन, कोविड टीका पई आवंटन, शिल्प एवं निर्दिष्ट क्षेत्र उपरे आवंटन सहित मेल हेले आशा प्रदान करिबा, अभिवृद्धि पई आर्थिक नियंट विस्तार करिबा साहसिक निष्पत्ति, आत्मनिर्भर भारत पई एक मध्यम एवं दीर्घकालीन दूरदृष्टि। However, Odisha would be hit by drastic reduction of share in central taxes by about rupees 10,848 crores for the current year, and as per the recommendations of the 15th Finance Commission, the horizontal share will decrease from 4.629% to 4.528% for coming 5 years. This will seriously impact the state. तेबे चलित वर्ष पाई केंद्रीय टिकस रे अंश प्राय 10,840 कोटी ह्रास पाई ओडिशा प्रभावित हेब एवं 15तम अर्थ आयोगर सुपारिश अनुଯାयी भूसमांतर अंश 4.629% रु 4.528% को ह्रास पाइब। यह राज्य उपरे गुरुतर प्रभाव पकाइब। Further capital investments very much required in Odisha, both in railway and highway sectors, as it has been planned for other states. There is a need to increase allocation in social assistance programs and quantum of transfers for local bodies. ओडिशा रे उभय रेलबाई एवं राजपथ क्षेत्र रे अधिक पुंजी विनियोग आवश्यक, जेहेतु यह अन्य राज्य पई योजना करा जाइछि। सामाजिक सहायता कार्यक्रम रे आवंटन एवं स्थानीय संस्था पई स्थानांतरर परिमाण वृद्धि करिवार आवश्यकता रहिछि। Centralization of revenue by introduction of cess in petrol and diesel will weaken the center-state fiscal balance. पेट्रोल एवं डीजेल रे सेस प्रवर्तन द्वारा राजस्वर केंद्रीकरण केंद्र और राज्य आर्थिक संतुलन को दुर्बल करिवो। Banks have to be made accountable to extend credit to women, farmers and MSMEs. महिला कृषक एवं एमएसएमई को ऋण बढ़ाइबा पई बैंक गुडी को उत्तरदायी करिबा को पड़िब। I am happy to note that union budget has turned green with digital budget like what Odisha has been following from last year. मु खुशी जे गत वर्ष ठारू ओडिशा अनुसरण करुथुबा डिजिटल बजेट सहित यूनियन बजेट मध्य डिजिटल होईछि। I am also delighted to see Mission Shakti appear in the union budget, focusing on women empowerment. After the Odisha's Mamta scheme was adopted by the union government from 2011-2012, replication of our state's flagship women empowerment initiative, Mission Shakti, clearly shows that Odisha has set benchmarks for the nation. I am hopeful that after Mamta and Mission Shakti, the next logical step towards women empowerment would be reservation for women in the Lok Sabha and the state assemblies. We will continue to fight for this. Thank you. मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण उपरे ध्यान यूनियन बजेट रे देखा जिबा परे मु आनंदित। 2011-2012 रे ओडिशार ममता योजना ग्रहण करा जिबा परे आम राज्यर फ्लैगशिप
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମମତା ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପରେ ପରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକସଭା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା।